Hello everybody. Today I'm going to explain you all about the fundamentals of Page replacement. being memory management unit. So, as you can hear me, everybody. The main reason I'm choosing this topic to explain you about because it will gonna be come in your examination as a different question, but at the same time you have to write a single answer in it. Storage device. Its core function is controlling, coordinating and allocating primary memory, which will be RAM, your random access memory, among multiple running processors to ensure efficient system performance. Actually, the main reason we are choosing memory management unit because, for example, for suppose we have a RAM, okay, and we have a secondary storage device as comparatively larger than our primary memory, which is RAM. RAM, 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 and this will be ROM, our SSD, secondary storage device. So, the main reason we are choosing here the RAM over ROM or ROM over RAM, pardon, is because ROM stores the information provided by the customer or service to store in a particular system of a particular computer, which cannot be transferred very easily. Actually, it can be transferred using networks, but majorly we can implement this as follows. So we know that RAM, RAM is the primary storing device and ROM is the secondary storing device. Okay, as we know about this, RAM is the primary storing device and ROM is the secondary storage device. As we know. So uh, we have to implement the segments as the cost of RAM's memory block is very much higher than ROM. As ROM stored in a disk form structures just like a circular queue. As you can see here, consider this as a disk in or ROM SSD secondary storage device in which the tiny clusters you can assume the data structure as circular queue, right? Circular queue, uniform shape, and we are implementing the circular queue here, right? Hmm. Circular queues. As you know, in circular queues, as we have studied in data structure, in circular queue, if an element in a queue has been initiated with an index of 0, then in the same rotated way, its previous element will be the n-1 element. If we are assuming it as its length or its diameter or its capacity of the disk, then supposed to be n, then n-1 will be the actual index in of a queue. I'm just using as an example for it. But it made a different. It changed variously. Actually, it changed variously. It have different concept. But for an example, I'm giving an example of how does a ROM stores information. Basically, different kind of things can happen while storing the information in a secondary storage device. But the main process of transferring information from RAM, which is primary storing device, and ROM, and which is secondary storage device. We can consider RAM as an as an active, active, active device, active memory storing device, whereas ROM is the second pass, passive storage device.
Why did I give it a name as passive and active here? Because in order to solve the problem or logical expression in a computer system by an operating system, which is a software, operations will be performed on RAM. And in order to make these operations to be more efficient and more brilliant for a system, we implement ROM, a secondary storage device, which stores the information on behalf in a computer only. The user does not have to complain or get require any another disk or any other memory storing device to store information. Primarily, ROM can be used to store information for an infinite time if required. So, the main reason here we are implementing it. Very easy and very helpful for learning the memory management unit, and also assuming that consider in also I have implemented some clusters here, right? For you, I have given you some clusters. For example, cluster. So you can also ask me what is the cluster? What is the cluster in this these in this disks? So the main reason why these clusters are implemented in disk is to store the information in a form of zeros or ones, which we implement or digitally call as digital signal. Just like zero or one, like this. Let me show you. Yeah, this is an analog graph. Analog graph is the wave type of graph which we implemented for transmission of one signal from one place to another. Whereas digital signals is implemented in a certain device in order to manage, process, and store information on the same device. Considering this as a cluster, uh, there are only finite amount of elements will be stored here. Right? Only as we know, it contains infinite field. Computer storage contains around uh, a general ROM maybe the general capacity of a ROM may be probably from 4 MB to 32 MB, right? 4 MB to 32 MB. For microcontrollers, maybe not. In smartphones, where we implemented commonly it as 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB. They have different kinds of concepts here, but probably we need to implement this kind of thing here. So, if I say that we'll be going to implement it here. So, this is the first step, and I will follow up with you on the second part, which will be the page replacement and segmentation in a memory management unit of operating system. So, as we are now understanding how does an operating system work in terms of storing information that you have provided it. सपोज मैं आपकी हिंदी में आपकी भाषा में बात करना चाहता हूँ ताकि आपको एक दिमाग में आपके अच्छे से चले ये बात। सपोज मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ कि एक ट्रक है। लेट मी ड्रॉ अ ट्रक फॉर यू। सपोज एक ट्रक है, वो अगर इसकी कैपेसिटी है कि वो 200 टन तक उठा सकता है। सो वन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन होगी कि वो 200 टन के नीचे या 200 टन के ऊपर तो नहीं उठा सकता, तो 200 टन और 200 टन के नीचे तक सामान एक एक प्रोसेस से मतलब एक प्लेट पे दूसरे प्लेट से ट्रांसफर कर सकता है। वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस सेगमेंटेशन इज दैट। तो सपोज मैंने आपसे बोला कि मुझे 201 टन लादना है। 201 टन एक ट्रक में लादकर दूसरे ट्रक में ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। सो इस कंडीशन में
the one of the most probable in computer science knowledge में तो यही सब होगा. अगर आप फ्लोट डेटा टाइप में इंट को स्टोर कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो अगर आप इंट में फ्लोट को स्टोर कर रहे हो तो some part of the data will be corrupted, right? Or it could be overflown. That is the main thing we can understand in segmentation. In segmentation, your data, your information, or your process will be divided into logical units, which we call in terms of segments in computer science knowledge. And each segment represents a meaningful part of a program, such as a function, stack, or data array, and can vary in size. तो सपोज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ. एक नॉर्मल कैजुअल सी प्रोग्राम ले लीजिए. जनरल सी प्रोग्राम है. VS कोड, VS कोड कुछ भी कहीं से भी ओपन कर सकते हैं आप. ओके, this is the program. This is a simple program that I was writing about Dijkstra algorithm. For example, I am writing the program as hash include stdio.h. This is the standard header file with C program, basic program, and then I am implementing in main, in argument, comma, char, pointer vector, argument vector. And suppose I am writing here as print hello world, hello world. This is a simple program that I'm understanding that it just shows you an output on a console, right? It is a basic program that will provide a basic output as a program to the user, to the computer user who will be using this computer. If he executes this program, he will get to know what does this program provides you. It just basically provide करता है कि print करता है hello world and with a new line. That's it. Compiler इसीलिए इस कोड को इसी वे से आपको प्रेजेंट करेगा. फर्स्ट सपोज मैं चाहता हूं कि आप एक एरे को इनिशियलाइज करें विद द साइज ऑफ 2000 एंड और आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें गार्बेज वैल्यूज होंगे, प्रोबेबली garbage values at the instance. At the instance, this integer array में कोई भी वैल्यू ऑफ लीजिए फ्रॉम 0 to 1999 इंडेक्स तक कोई भी वैल्यू ले लीजिए वो गार्बेज राशि ही होगी, क्योंकि एज वी नो दैट एरेज में इनिशियलाइजेशन पे गार्बेज वैल्यू हर एक इंडेक्स पे आपके स्टोर होती है. दैट्स द मेन रीजन. So why am I explaining you this concept? Because this same thing will be also be implemented in operating systems also. मैंने बस आपको ये एग्जाम्पल इसीलिए दिया है ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो, एक बेसिक नॉलेज हो. ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट एक सबसे एक 10 लोगों का प्रोग्राम, एक ऑर्गेनाइजेशन जो एक सिस्टम बनाता है, एक सॉफ्टवेयर बनाता है. This is just basically implementing this from scratch only. It is implemented by roots only. If you understand the roots, you will get to know everything about it. So now, with the programmer, गारज वाली होती है उसमें स्टोर होती है. फॉर सपोज मैंने एक स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज किया है, struct node. आई एम गिविंग इट नेम एज नोड, और इसके अंदर मैंने दो एलिमेंट्स स्टोर किए array1 नाम से एंड दूसरा विल बी ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप ऑफ कोर्स. array2 नाम पे हमने डिफरेंट साइट्स के इनिशियलाइज किया एज एन array in a struct node, in a node, in a structure which will be named as struct. So as we will see here,
It will initialize and stores instance space. It will store some garbage values. Garbage value. ये भी सेम ही है, सेम यही थी, इसमें भी कॉपी होगी, राइट? Am I right or not? The same thing will be copied here out. So आप एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे कि if I want to dynamically grow this, this is actually it cannot be grown dynamically because array 1 की साइज होगी 30 and array 2 की साइज होगी 50. That's the here in C program we are implementing nicely. But if I want to increase it dynamically, I can implement it the node as a pointer, right? As a pointer. But ये दोनों variables तो constant होंगे. They will be static only. But the node, the structure node will be dynamic only, and we can theoretically using stack, using heap memory, आप इसे कितना भी बड़ा कर. That's the main important thing here to be focused. सेम थिंग अगर आप सेगमेंटेशन में भी आते हो, यही सेम चीज यहाँ पे भी हो. इसमें अगर आपको एक बात बताऊं, you can imagine it as a tree which can be grown, which has branches, different branches, and each branch can be grown differently, right? हर ब्रांच अलग से ग्रो हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल एक ब्रांच में 3 सब ब्रांचेस है और दूसरे ब्रांच में 5 सब ब्रांचेस है. So they grow differently, right? That's the main important thing you have to know in segmentation. In segmentation, you divide one block of memory into different segments, and thus those segments can be grown or shrink or added or deleted or can be grown or shrink of their own. This process can be in segmentation is called as fragmentation. I mean fragmentation मतलब एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, इसी में आता है, सेगमेंटेशन में ही होता है as a fragmentation. But you have to understand what is this means. External fragmentation, internal fragmentation. एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन में आप, मैं बेस्ट एग्जांपल दूं तो आपको कि फ्लोट डेटा टाइप में आप इंट वेरिएबल को स्टोर कर रहे हो, लाइक implicit typecasting. That's the best example for in internal fragmentation, right? For external fragmentation, I will suggest you the explicit typecasting in programming only. So, the main important thing, there are two types of segmentation: virtual memory segmentation and simple segmentation. Simple segmentation आप जान सकते हो definition. It divides the process into segment and loads all of them into memory at once, though they may be non-contiguous. अगर आपको एक मैं आपको एक चीज बताऊं कि आपका दोस्त हो, आपका दोस्त रहता है इंडिया में, तो आपके दूसरे दोस्त को भी नेसेसरी है कि वो इंडिया में ही रहे. मतलब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राइट? आपके पड़ोसी में थोड़ी ना रहे हो, आपके घर के बगल में ही थोड़ी ना रहे. वो कहीं भी हो सकता है, उसका घर कहीं भी हो सकता है. वो अगर आप दिल्ली में हो तो मे बी प्रोबेबली वो कहीं चंडीगढ़ में भी हो सकता है, आपका दूर का दोस्त होगा. नहीं तो वो प्रोबेबली अगर आप दिल्ली में हो, अगर आप साउथ दिल्ली में रहते हो मे बी वो प्रोबेबली नॉर्थ दिल्ली में हो सकता है. तो प्रोबेबली दैट विल बी द बेसिक एग्जांपल ऑफ सिंपल सेगमेंटेशन. इस इस सेगमेंटेशन में आपके जो ब्लॉक्स होते हैं, मेमोरी ब्लॉक, वो अलग अलग लोकेशन पर डिस्क में स्टोर होते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू गैदर दैट इंफॉर्मेशन, वन one memory block will be linked with another memory block. मतलब it just working as a like a linked list, but in software program as a hardware concept, right? You have to remember that it is a totally hardware concept. It added with a passive memory management.
Whereas in virtual memory segmentation या secondary memory virtual memory और बहुत सारे नाम होते हैं, ROM, secondary memory, virtual memory और बहुत सारे नाम होते हैं. It is basically implemented as an SSD of the operating system. SSD major important role play करता है in terms of storing your information in the system itself, in the system itself. In virtual memory segmentation क्या करता है? It divides the process into logical segments that that are loaded into physical memory only when needed. मतलब आप अगर जान सके कि अगर यूजर है और यूजर को स्टोर करना है as my name. I want to store my name using a program. I want to store my name using a program so that it can be very much implemented easily, right? So I need to initialize a variable to store that information in a block. Suppose I want to print this hello world. I want to print hello world on the console. So is that necessary that I need to store that information into a by creating a variable and storing my hello world? Is it necessary? I can just basically use the standard input output header file and implement the printf function to provide me the hello world on the output. That is the main thing you can use in virtual memory segmentation. In virtual memory segmentation, your information is stored in a physical memory, but it only stores the information into a logical segment only if the user requires, only if it required by the user on basis of some conditions only. And the second thing we will be implemented in memory management technique is paging. So what is paging? Okay, as per this definition, it is a fixed size memory management scheme that eliminates external fragmentation. It divides physical memory into fixed size blocks called pages and logical memory into blocks of same size called pages. So as per this definition, it is a fixed memory block. सेगमेंटेशन में हमने जाना था कि ये डायनेमिकली चेंज हो सकते हैं ऑन ऑफ दिस फॉर्म विद द एग्जांपल ऑफ ब्रांचेस, a tree branch where paging is considered as static, like fixed size memory block management scheme that eliminates external fragmentation. It divides physical memory into fixed size blocks. We call it as frame in computer science language. बेसिकली आप ये जान सकते हैं पेजिंग में कि आप फिक्स साइज के फ्रेम, फिक्स साइज के क्यूब्स और आरे कोई भी डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं एज इन कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हाउ टू इम्प्लीमेंट इट. बट इन ऑपरेटिंग सिस्टम we are using data structure like queues, circular queues. Each of the circular queues will be implemented here. We call it as frames here, and logical memory into blocks of same pages, same size called as pages. सपोज आपका एक मेमोरी ब्लॉक है, आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर की है आपने एज अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मेमोरी, राइट? स्मॉल ब्लॉक ऑफ मेमोरी आपने स्टोर. एज पर सेगमेंटेशन आप उसे डिवाइड करते हो, डिवाइड करके डिफरेंट लोकेशन पे आप इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो ऑन डिस्क इटसेल्फ, बट दे आर लिंक्ड टू ईच अदर. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं. पेजेस क्या करता है? ये एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन को हटाता है. अगर I given you an example of explicit typecasting as the programming concept, right? So external fragmentation क्या काम करता है कि आपका जो इंफॉर्मेशन है मेमोरी ब्लॉक से अगर बड़ा है तो वो उससे भी बड़ा, लाइक फर्स्ट पार्ट आपका इंफॉर्मेशन वही स्टोर करेगा, बट रिमेनिंग, फॉर एग्जांपल आपका as per our computer science topic, suppose SSD स्टोरेज में आपको 2 to the power 10 बाइट्स का स्टोरेज, आपको एक क्लस्टर आपको दिख रहा है जिसमें 2 power 10 बाइट्स स्टोर हो सकता है, और आपके पास है 2 power 10
लाइक वन साइज का इंफॉर्मेशन ऑफ मेमोरी ब्लॉक। तो इस हिसाब से तो 2 पावर 10, तो आपको 2 पावर 11 साइज का 11 बाइट्स का ब्लॉक चाहिए होगा इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो रिमेनिंग 2 to the power of 11 माइनस जो इंफॉर्मेशन होगा 2 to the power of 11 minus 2 to the power of maybe probably what I can say 2 to the power of 11 maybe उस एक बाइट की मेमोरी के लिए आप 2 to the power of 11 में मे बी प्रॉब्ली अराउंड 1200 एंड 1023 बाइट आप वेस्ट कर रहे हो फॉर दैट वन बाइट। In this mechanism, we can implement paging as per this signal. It is very optimal approach used to store information in an efficient way in disk or a block. So इसमें बेसिकली हम पेजिंग में पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक्स का यूज करते हैं। तो इस टेक्निक में इन ऑर्डर टू स्टोर इंफॉर्मेशन आज हमको पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी की स्टोरेज किफायती बहुत कम होती है as compared to our secondary storage, right? secondary storage की कैपेसिटी हमारी बहुत ज्यादा होती है as per to our as per our random access memory. It is primary memory, of course. We have different names for it, storing definition. So इसलिए रैंडम एक्सेस मेमोरी से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते समय टू SSD वी हैव टू इम्प्लीमेंट पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक्स। इसमें हम पेजेस एज ए ब्लॉक को सेपरेट करके ऑफ सेम साइज ऑफ इक्वल बैलेंस साइज ट्रांसफर करता है एज एन इंफॉर्मेशन। बेसिकली दो कंडीशंस implement होता है। It is as per definition, you can see the definition. It is a technique which is necessary to limitate the physical memory because RAM's limitations and a demand of virtual memory. Since a computer often runs multiple processes that collectively requires more memory than physical memory available. Suppose आपकी RAM की कैपेसिटी है 2 GB, आप एक गेम खेल रहे हो फॉर एग्जाम्पल, आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में मे बी आई कैन से GTA 5 खेल रहे हो with random access memory of 8 GB RAM। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका पहली बात तो आपका सिस्टम में वो गेम चलेगा नहीं, उसके लिए और बड़ा स्टोरेज चाहिए। बाकी तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो तो गेम चलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास रैम होगा 32 GB का, that will be more efficient to run GTA 5 right on that game. I'm not talking about the pirated thing. I'm talking about the real GTA 5 OG GTA 5। मार्केट में बहुत सारे पायरेटेड GTA 5 के गेम्स आते हैं, तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू टू वॉच on play only the real one. That's the main implementation. That's the main opinion that I have been give you honestly. पेज रिप्लेसमेंट क्या होता है आपका डेफिनेशन हमने जान लिया। कंस्ट्रेंट में इसके बहुत सारे कंस्ट्रेंट होते हैं पेज रिप्लेसमेंट से, जैसे कि RAM is finite when all available frames are filled and process require a new page. ऐसा इस टाइप। सपोज आपका आपकी RAM की स्टोरेज एक फाइनाइट लिमिट तक ही जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं जा सकती। बट whereas आपके SSD कंपैरेटिवली RAM के हिसाब से बहुत ज्यादा है, it can only store information. As it is a passive memory element, it can only store information. You cannot perform operations, any type of Boolean logical operations, you cannot perform on SSD. But your primary memory, which is RAM, can perform all these problems like logical memory processing. Everything can be performed by your RAM only. So RAM is a finite memory logic memory device that can store only finite information, finite amount of memory it can store. That's the main reason. So एक
फाइनाइट अमाउंट ऑफ फ्रेम को एक पेज रिप्लेसमेंट से चाहिए ही होगा। अगर अगर पूरा फ्रेम भर चुका है, पूरा फ्रेम एज पर नाउ सपोज पूरा फ्रेम भर चुका है, आपका सर्कुलर क्यूब है और साइज ऑफ एन माइनस एन, साइज ऑफ एन समझ लीजिए एज इन प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, उसका साइज है एन और आपको चाहिए एन प्लस वन एलिमेंट, उसका साइज तो भर चुका है, तो यू हैव टू रिप्लेस दिस एंड it basically it will provide you an optimal approach. It can increase your programming efficiency here, which can improve your CPU utilization of your computer CPU utilization. That's the main technique here. Basically, we have three main algorithms here. FIFO, first in, first out page replacement, LRU, least recently used page replacement, and optimal page replacement. That is basically a theoretical concept. We will not focus, मतलब ये इतना फोकस नहीं किया जाएगा, theoretically हो जाता है ये, but in real life we implement FIFO page replacement and least frequently used page replacement algorithm. That's the main algorithm. Suppose आपके पास एक पेज रेफरेंस, first we will talk about FIFO, first in first out page replacement algorithm. एक ऐसा algorithm है, जनरली ये ऐसे ही वर्क करता है जैसे एज ऑफ योर जनरल क्यू डेटा स्ट्रक्चर, for I must say the circular queue here because the it will always begin at the from the end of the queue. Okay, as we know queue कैसे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आता है इट विल बी शेड्यूल, जो सबसे पहले आता है वही सबसे पहले काम करता है, और जो सबसे लास्ट में आता है, जो सबसे लास्ट में आता है वो सबसे लास्ट में ही आता है। मतलब शेड्यूल ऐसे होगा कि जो सबसे पहले आएगा प्रोसेस के लिए, प्रोसेसिंग के लिए वो सबसे पहले जाएगा, मतलब जो सबसे पहला मेमोरी ब्लॉक होगा वही सबसे पहले मेमोरी स्टोरेज में जाएगा, स्टोरेज डिवाइस में जाएगा। अगर रहा वही सेम अप्रोच वी कैन इम्प्लीमेंट हियर। सपोज हमारे पास एक पेज रेफरेंस ट्री है विच इज 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0 और हमने फ्रेम साइज दिया है 3। तो टीफो का पेज रिप्लेसमेंट कैसे वर्क करेगा, एज ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेम एट एन इंस्टेंट एम्प्टी होगा, और एज पर नाउ अगर फॉर एन एम्प्टी फ्रेम it only be considered as a page fault even when a repeated element has been occurred within the frame size only। मतलब आपका फ्रेम साइज, फॉर एग्जांपल आपका फ्रेम साइज है 5 और इस 5 फ्रेम के साइज से पहले ही आपका अगर पेज हिट हो जाए, पेज हिट हो गया, तो यहाँ पे कैंसिल है, आई नो दैट, बट यू हैव टू फोकस ऑन डिफरेंट, that will be a page hit only, but you have to focus on different, like for example you have frames of 3 starting the one जाएगा क्योंकि 1 सबसे पहले है, then it will point out to next second में जाएगा, it will point out to 2, again थर्ड पे जाएगा, it will point out to next in its back। एक्चुअली मैंने लिखा ऐसे है, पर ऐसे एज अ बैक, एज अ लाइन, एज अ क्यू, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, ऐसे काम करेगा एज अ पेज रिप्लेसमेंट। फर्स्ट आएगा, फिर फर्स्ट के बाद सेकंड आएगा, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, पेज फॉल्ट हुआ, पेज फॉल्ट हुआ, पेज फॉल्ट हुआ, यू हैव टू रिप्लेस दिस। ओके, देन 4 आप डालोगे, 4 साइज फुल हो गया, वी हैव डिफरेंट स्टैटिक फ्रेम साइज, तो यहाँ पे आपको सर्कुलर क्यू की तरह इंप्लीमेंट होगा, एज ऑफ इंडेक्स चेंज होगा from n-1 index where n is a frame size to the zeroth element, the first element, तो 4 पे होगा, फिर 4 ऐसे चेंज होगा, फिर 1 की जगह 4 आएगा, 1 की जगह 4 आएगा, फिर 5 होगा, फिर 2 की जगह 5 आएगा, फिर 4, नेक्स्ट स्टेप में 4 को ऐड करने पे हमको यहाँ पे पेज हिट होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 4 हमारे पास पहले से है, तो यहाँ पे कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होगा पेज हिट होने के कारण। फिर अगेन यहाँ पे 3 ऐड होना चाहिए, बट द रीजन इज यहाँ पे 3 पहले से है, तो अगेन पेज हिट होगा, बट इंडेक्स चेंज होते रहेंगे।
from here, from n-1 to 0 again, from index 2 to 0 for this example, फिर 1 0 आया, फिर यहाँ पे पेज पर 2 यहाँ पे पेज फॉल कर सकता है क्योंकि सारे यूनिक एलिमेंट्स होना है। जो हमारा 2 है यहाँ पे पहले पेज में नहीं है, तो यहाँ पे 2 जाएगा अगर इंडेक्स 1, देन अगेन we got 1 but 1 यहाँ पे नहीं है, so we will get a page fault here and we will replace the 3 here with 1 अगर index 2 होगा, फिर अगेन इंडेक्स 0 पे जंप करेगा as of now given page is 0, page is 0, so it will be implementing 0 on a 0 index। अगर हमारे पेज खत्म हो गए हैं, पेज रेफरेंसिंग खत्म हो गया है, तो टोटल frames यहाँ पे है 10 frames, so we got 10 steps in a programming concept। suppose तो मैं इसका प्रोग्राम लिख रहा हूँ इसमें C, so we will also get 10 steps only। if I am running a loop for this, it will get 10 loops only। suppose हमारा पेज string का length है as of 10, so we will get a time complexity here as big O of n, big O of n, big O of n. It will be a very not better, not poor time complexity being honest. Here C for page. Then here then next we are implementing for lead recency use case replacement algorithm। यहाँ पे हम एक पेज रेफरेंस स्ट्रिंग का पास्ट चेक करते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट टाइम तक जो एलिमेंट नहीं करेगा, दैट विल बी द वन विच विल बी एविक्टेड फ्रॉम द ट्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज ए पेज रेफरेंस मैंने आपको दिया है 7 0 1 2 0 3 0 4 2 3 फ्रेम साइज हमने जैसे कॉमन लिया टेक्स्ट 3, यहाँ पे 3 लिया हमने फ्रेम साइज। एट फर्स्ट 7 जाएगा क्योंकि एम्प्टी था, तो इट विल बी जनरली पेज फॉल्ट क्योंकि कोई भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं था। और उसके बाद इंस्टेड टू 0 जाएगा और यहाँ पे 0 है नहीं, एवरीथिंग इज यूनिक, तो अगेन इट इज अ पेज फॉल्ट। और फिर अगेन इन द नेक्स्ट स्टेप 1 जाएगा which will be generally a page size क्योंकि empty था, every element is unique and next element is 2, but यहाँ पे size of the frame 3 था और सारे नए कलर full हो चुके हैं, so we have to replace a page here with some with 2 only। तो यहाँ पे हमको बैक ट्रैक करना है in the page reference string and we have to consider the index position on the frame which got at the first, मतलब जो सबसे लास्ट में सबसे पहले आया था फ्रेम में, इन फ्रेम एलिमेंट में जो सबसे पहले आया था वो दैट विल बी एविक्टेड। यहाँ पे देखिए 2 है, तो 1 पहले आया, इससे पहले 0 आया और उससे पहले 7 आया। यहाँ पे 7 0 1 में 1 पहले आया, उसके पहले 0 आया और इसके पहले 7 आया, तो 7 यहाँ पे एडिटेड हो जाएगा और उसके प्लेस में 2 आएगा। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट है 0, यहाँ पे देख सकते हैं 2 0 1 है, 0 यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ पेज हिट हो। सो नेक्स्ट स्टेप में हम चले जाएंगे एंड वी विल कंसिडर टू द नेक्स्ट पेज रेफरेंस पेज। तो यहाँ पे 3 है, 3 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिमेंट 2 0 1 है एंड 3 है, 3 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो पेज रिप्लेसमेंट होगा, पेज फॉल्ट होगा। यहाँ पर 3 से पहले देखते हैं एलिमेंट 0 है 2 है 1, 0 आ गया, 0 से पहले 2 आया और 0 से पहले 1 आया, सो हम 3 को 1 के इंडेक्स प्लेस पे रिप्लेस करते हैं एज इन फ्रेम में। तो यहाँ पे 3 को रिप्लेस करेंगे एज ऑफ 1 के प्लेस, यू कैन सी हियर राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा 0, अगेन 0 यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ पेज हिट एंड नो चेंजेस विल बी अकर इन अ फ्रेम। इन नेक्स्ट स्टेप
वी हैव 4। पहले से यहाँ पे 4 है नहीं, और सबसे पुराना एलिमेंट यह है। 0 आया, 0 से पहले 3 आया, 3 से पहले अगेन 0 आया, फिर उससे पहले 2 आया, राइट। 2 आया, तो हम 2 के पेज में 4 को चेंज करेंगे एज अ फॉर न्यू ओल्डेस्ट लॉन्गेस्ट टाइम तक हमारे फ्रेम में जो सबसे पहले एलिमेंट था दैट विल बी रिप्लेस्ड फर्स्ट। देन आता है 2, देन आता है 2, देन आता है नेक्स्ट विच विल बी 2। यहाँ पे 2 है नहीं, 2 नहीं है। सबसे पहले जो एलिमेंट आया 4, 4 से पहले 0 आया, 0 से पहले 3 आया, 304 है एलिमेंट, तो 3 विल बी रिप्लेस विद 2 अदरवाइज फॉर न्यूएस्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे एलिमेंट है 2, 0 एंड 4। सो नेक्स्ट एलिमेंट है 3, ये 3 है, तो इट विल बी जनरली पेज फॉल्ट, राइट, क्योंकि सारे यूनिक एलिमेंट है। तो 204 है, 2 आया, 2 से पहले 4 आया, और 4 से पहले 0 आया। सो जीरो, इस फ्रेम में जहां 0 है, जिस इंडेक्स पे 0 है, दैट विल बी रिप्लेस्ड विथ अवर 3 एंड दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ पेज फॉल्ट। तो हम लोग अगर पेज टोटल पेज हिट्स को कहना चाहते हैं, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द लेंथ ऑफ द पेज रेफरेंस स्ट्रिंग माइनस द टोटल पेज फॉल्ट अक्सर इन द एल्गोरिथम व्हाइल परफॉर्मिंग द एल्गोरिथम। यहाँ पे हमारे टोटल पेज फॉल्ट है 8, पेज फॉल्ट यहाँ पे हमारे 8 हुए, और टोटल लेंथ हमारा था पेज रेफरेंस स्ट्रिंग है। तो जनरली 10 minus 8 will be 2, so we will get 2 as our total page hit for this while implementing this LRU page replacement algorithm. ऑप्टिमल ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट का अप्रोच इज ए थियोरेटिकल, क्योंकि आप फ्यूचर में देखते हो विच कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज मेमोरी पेजिंग में मेमोरी ब्लॉक्स में it cannot be we cannot predict which size of the memory which page can be occur in future, right? That's the main problem here. Okay, so हमने जाना कि कैसे पेज रिप्लेसमेंट वर्क करता है, सेगमेंटेशन क्या होती है, और बेसिकली हाउ डज मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट वर्क फ्रॉम रैम टू रो, फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी। दैट्स द मेन थिंग। अगर आपको मेरा ये वीडियो में कुछ भी समझ में आया, तो प्लीज एक लाइक छोड़ के जाना और सब्सक्राइब कर देना मेरे इस चैनल को। एज अ आई एम आई एम स्टडिंग ऑल्सो राइट नाउ, studying and earning too. So that will be a very best opportunity for me to learn from YouTube and to work with YouTube, so that आप लोगों का सपोर्ट की वजह से मुझे भी आपका सपोर्ट पसंद होगा, और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए कंटेंट बनाए। थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।